गाड़ियाँ तक तो मैं बोला चलो रोल्स रॉयस कर ली, लैम्बोर्गिनी कर दी, बेंटली कर दी, फरारी कर दी, अभी क्या? What was that? Private jet? I mean, are you serious, Harsh भाई? I was the first in India to ceramic coat a private jet. तो अभी इसरो में पिच करने का प्लान कर रहे हो या? What should a person look before buying a car? It also depends on आपने कौन सा मार्केट गैप देखा था? आपको लगा that I'll be able to create something ground breaking. आज से 15-16 साल पहले लोगों को ये भी नहीं पता था कार डिटेलिंग है क्या. In 2024, every 6 minutes there was a 50 lakh plus car sold in India. रोज गाड़ी को मस्त पानी से साफ करो, but when you see that same car, you can see the marks. How can we prevent that? सबसे बड़ा दुश्मन पेंट का अगर होता है तो वो है सॉल मार्क्स. Never ever clean the car with dust. Straight away with the marker. Everyone loves BMW. What do you like in that? Throttle में feel कैसी आती है? इसलिए ही BMW लेंगे. शॉफर ड्रिवन कार चाहिए तो मर्सिडीज लो. Someone who has a crazy fleet is आकाश अंबानी. उसकी सिक्योरिटी फ्लीट में रोल्स रॉयस घूमती है. इंडिया में जो भी पहली गाड़ी आएगी वो अंबानी फैमिली के वहीं आएगी. Hello and welcome to Beyond the Noise. I'm your host Dhruvish and today we are having our first outdoor podcast. So today we are having Mr. Harsh Tanna, founder of Ahmedabad's largest car detailing studio. As you can see the fleet of cars here. So today we are going to discuss that how car detailing works and different types of car details. So without wasting much of your time, let's get started. Hello and welcome to Beyond the Noise, Harsh sir. How have you been? I am good, Dhruvish. How are you? I'm nice and it's an honor because see, ये हमारा पहला outdoor shoot है. You know, outside the box if we go from the studio. So it's a very nice thing, nice setup. Thank you so much. So how did you started? What was the journey behind this? Long journey. In fact, cars were my passion. I was very young when I was fascinated with cars. I was against job. I did not want to go for a job thing. As I said, cars were my passion. I wanted to do something related to cars, and that I had an opportunity when I was 21 years old, almost equivalent to you. When I opened Car Spa, that was my dream project wherein I wanted to do my business related and around cars, in fact. So that is how this journey started. You would be amazed at that time, as I told you, I was fascinated with cars, but then driving a BMW or an Audi was a dream. So मैं बोला कि गाड़ी ले ना ले चला लेंगे. So that's how, that was the idea behind it. But then yeah, it was a quite new thing in the market, the car detailing thing. So yeah, so far so good. It's been 15 years in the horizon now and we're just getting started with the studio now. So, you know, becoming a pioneer in Ahmedabad's largest and best detailing studio, how do you reflect to that? कि आप लोग, I mean, what are the insights? I mean, क्या सोचना पड़ता है ये सब create करने से पहले? Started small. Again, you have to start small to dream big. So it's small baby steps that you have to take. You cannot just think कि भाई ये करना है तो ये खोल देंगे. But then it was small baby steps that I took, and it almost took me 15 years to get to this particular dream project that I have. So, you know, as I said, I started at the drive-in studio, which is almost 1200 odd square feet, to right now being the Ahmedabad's largest car detailing studio, which is a 9,000 plus square feet facility. So small steps, you know, builds up to that ultimate dream that I have, and that is how it is. As we are having different things for the car detailing, सबको पता ही नहीं है कि क्या डिटेल में हम लोग कार को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकते हैं. So can you please explain more on that कि क्या है ये सब चीजें? There are different options. First of all, depending on the car's condition, right? उसमें it starts from car detailing, which is normal buffing process, or maybe interior cleaning, to going towards ceramic coating treatments, which keeps your car shining like brand new. It ensures that your paint does not go dull. Then for an advanced treatment, if you see, we have paint protection films also now introduced, which are there since quite a few years now, but it's still at an early age in India. But then people have adapted to paint protection films. To a certain extent, it creates your car with a scratch-proof paint, and it can withstand minor key scratches also. It is almost 200 microns thick, which is like a really thick film. Mobile में आपके screen guard जैसा होता है उतना thick layer पूरा गाड़ी के ऊपर आ जाता है. So it not only ensures the shine of the paint, but it can withstand key scratches as well. So compared to ceramic, as per your budget, we have different options. So a normal buffing job to a coating job to a PPF. So what is the biggest myth which people have? लोगों को लगता है कि ceramic coating करवा दूंगा but I'll not be able to scratch proof my car.
So is that a myth or that's a reality? तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिरामिक करने के बाद ऐसा मत सोचना कि गाड़ी बुलेट प्रूफ हो जाएगी. ऐसा नहीं होगा, राइट. इट इज मेनली फॉर द पेंट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम रेगुलर वेयर एंड टेयर दैट आर क्लाइमेट गिव्स अस. पॉल्यूशन है, एसिड रेन है, स्नो, सॉल्ट, कोरोजन, एसिड रेन, केमिकल रेजिस्टेंट रहता है. बिकॉज ऑफ पॉल्यूशन देयर इज अ थिक फॉर्म लेयर ऑन द पेंट ऑल्सो. तो वो सब चीज़ों से आपका पेंट खराब ना हो, उसके वजह से ये ट्रीटमेंट करवाते हैं लोग. इट कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम माइनर स्क्रैचेस, राइट. इट कैन स्टिल विथस्टैंड डॉग स्क्रैच ऑल्सो, right? So these are minor scratches and minor wear and tear which a ceramic can protect. Of course, if we opt for PPF, that is the ultimate paint protection for your car. Sorry for interruption, but can you please spell PPF because It is paint protection film. Okay. So that's the full form of PPF. Okay. Yeah. So what does PPF basically do? I know what ceramic coating is, that we have to apply a layer onto that. But what is PPF? How does that came into the market? India, as I said again, is at a very early stage. If you see in the US markets or the UK markets, this is there since quite a long time. But it is an added protection compared to ceramic. Ceramic में कैसा होता है, एकदम पतला thin invisible layer लग जाता है, which can again protect your paint from minor scratches on wall. Then if someone wants extra protection on your paint, wherein they want to make their car, prone from stone chipping also. हाईवे पे अगर आप जाओगे तो आगे वो कंकर वंकर उड़ते हैं. हाँ, when you speed up. Yeah, so it creates small dents also. So PPF can withstand those dents as well. Okay. So scratch proof तो रहता ही है, उसमें की तक के scratches तो रहते हैं, but stone chipping वो सब से भी वो protect करता है. Paint preserve करने के लिए whenever we have different options in PPF also, varied from 3 years, 5 years, 7 years. So depending on your budget, again you can opt for that PPF, and when in future you want to remove, your original paint comes back as per the brand new showroom condition you had. So that is where it is again costlier than the ceramic, but then it preserves your paint when you remove it in the future. We stated that it gives a better reliability compared to ceramic. Much better. If we go with the costing, right? So there are, I guess, different layers or of PPF which are being provided as per my knowledge. So उसमें क्या होता है कि कौन से लेवल के PPF होता है? At H2O Car Spa, we are always one step ahead than what the market has to offer, and we are almost, in terms of research and products also, we are far more, ahead than competition is what I would say. Compared to a ceramic, if you say, we were the first in India to launch graphene coating, which is a better version of ceramic. Graphene coating. That is infused with graphite, which is stronger than diamond. It is the strongest discovered, chemical compound on planet Earth. It is infused with graphite properties. PPF की अगर बात करें तो cost wise, as I told you, कि उसमें 200 माइक्रॉन तक के भी आते हैं, and that is the standard size of the microns that is there. But then there are different materials also. TPH आता है, TPU आता है, polycarbonate TPU. We are the first again in India to launch polycarbonate TPU. What is polycarbonate? It again has polycarbonate के pellets उसमें TPU में mix होते हैं, so it gives 3x more protection than a normal PPF, right? So we are again the first in India to launch polycarbonate TPU. We are again the first in India to launch a 250 micron product, right? अगर आपको और strong protection दे तो we also have a 300 micron product, and सबसे strongest, which is the world's first, is a 400 micron thick PPF, which is almost double the size of a normal PPF that we apply on the cars. So we have wide range starting from 3 years warranty till lifetime warranty products. You're having many options in that. So if we go with 700 mm जो आपने बोला, 400 mm, my bad. तो उसमें क्या difference होता है? So does your car feel heavy when you close or open the door? It would not. The only difference is that particular thick film people apply where you do a lot of off-roading, right? Off-roading मतलब अगर आपका बहुत एकदम वो muddy roads हो, हाँ, like hardcore off-roaders. Okay. अभी as I said, PPF भी गाड़ी bullet proof नहीं कर देगा, but then it can withstand to a certain extent of scratches. PPF में 400 microns में in case, as you said, added protection वही है कि off-roaders के लिए that particular product is recommended more. Of course, it does not matter on the size or the weight, but then that is why we've introduced such products also. PPF protects your car. It does not, bulletproof your car. So can you share a scenario where your client had applied PPF from your end and he saved something very big? If you're I'll tell you an example of a client. I'll not name the client, but he had a supercar.
and Which supercar if it was a Porsche Taycan, all right. right? The electric supercar, the latest electric supercar as we say. And what happened was कि गाड़ी normally road पे चल रही थी. There were two scenarios with the same car, in fact. Okay. The first one being गाड़ी रोड पे ही खड़ी थी and someone वहाँ पे कोई बाजू में से चल रहा था and they banged the car. गाड़ी तो वहीं थी, but then उसका पेंट का ट्रांसफर उस पर हो गया. यूजुअली अगर PPF नहीं होता तो गाड़ी का पेंट वो चिप ऑफ कर देता, which again is a very costly affair for a supercar to repaint that particular panel. Not only that, but it then decreases the value of the car. Just because of the PPF, it did not chip. The PPF did not chipped. एंड देन पेंट भी उनका प्रिजर्व हो गया, राइट. और वो उतनी चीज़ जो डैमेज हुई थी वो इजीली रिप्लेस भी हो गई. सेम क्लाइंट का सिनारियो वो भी था. घर से गाड़ी जब निकाल रहे थे तब उनको स्लाइड पता नहीं चला तो गेट में थोड़ी गाड़ी टच हो गई, राइट. अगेन पेंट तक वो चीज़ नहीं गई. इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द PPF दैट वी हैड अप्लाइड. द पेंट गॉट प्रिजर्व्ड एंड द क्लाइंट सेव्ड अ लॉट ऑफ मनी, not only for the paint but the values of the car Value as of the well. car. It got preserved. ये सब तो पता चल गया that you are having many options और ये भी एक different business हो सकता है if we go with PPF and ceramic coating. So interior के लिए कोई option है या we are still on a tangent position? Basically pre-cut PPFs भी आते हैं इंटीरियर के लिए भी. Pre-cut PPF. Pre-cut PPFs are wherein it can protect your. अभी काफ़ी कार्स में पियानो फिनिश पैनल्स आ जाते हैं, राइट. तो उस पर भी स्क्रैचेस काफ़ी सारे पड़ते हैं. तो प्री-कट के लिए भी देर आर इंटीरियर प्री-कट्स के लिए भी देर आर PPFs which have started coming in. तो वो एग्जैक्ट साइज के उसमें वो हम लोग कर सकते हैं, बट दैट्स अ वेरी प्रिसिशन जॉब बिकॉज देर आर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स ऑल अराउंड द पैनल्स. Besides that, we have regular detailing jobs also for interior cleaning, wherein if your car is dirty, it has dirt all over the seats. काफ़ी stains भी आ जाती है cars में, right? If you see in normal cloth वाली जो अगर गाड़ी होती है, leather seats नहीं होती, PU leather वाली. But then again उसमें फिर वो सारे dirts भी हम लोग निकाल के thorough treatment with multi-purpose cleaners. We keep the car in fresh condition and then it comes back to brand new pristine condition like showroom. So, let's say I'm having an example that I want to apply a mid-range PPF and I'm coming with you and I'm applying a mid-range PPF and then I'm going off-roading. So what happens with my car? I mean, वो PPF mainly उसमें क्या protect करता है? Where does the protection come into the role? As I said, off-roading के लिए it can withstand scratches from the plants also. जो उसमें काटे वाटे के भी उसके वजह से जो scratches पड़ते हैं वो पेंट तक नहीं जाने देता है वो चीज़. स्टोन चिपिंग भी उसमें आपके काफ़ी बचा सकते हैं. स्टोन चिपिंग में काफ़ी आप अगर पुरानी गाड़ी देखोगे एंड इफ़ यू हैव हाईवे ट्रैवल 90% of the cars have small dots on the paint. The only option to remove that is repainting the whole bonnet again. So PPF कराने के बाद वो सारी चीज़ के hassles आपके चले जाते हैं mainly. So if we talk about scratches, right? कि when you buy the car new from the showroom, so people are having that myth कि हर रोज गाड़ी को मस्त पानी से साफ करो. You go with the revolution pattern कि गोल गोल साफ करो. But at the end, when you see that same car under a bright sunlight, so you can see the marks, right? So how can we prevent that? या वो हो ही जाता है. हो तो नहीं जाएंगे. There is a way to clean it. उसमें first of all you need to guide your person cleaning at the home also. There are different options. पहले तो अगर बहुत सारा dust accumulate हो गया है, never ever clean the car with dust straight away with the microfiber. Swirl marks क्यों आते हैं? ऊपर dust जमा हुआ रहता है, उसमें अपना घर का बंदा उस पर घिसता है. हाँ. So that is the reason why swirl marks occur. Now you need to guide him. कि बॉस पहले डायरेक्ट कपड़ा नहीं मारना है, उसको पहले गीला कपड़ा करो या पानी से एक बार स्प्रे कर दो. कम मिट्टी है तो गीला कपड़ा मारो, then use a normal microfiber, which will again not completely prevent, क्योंकि ये अल्टीमेटली आदमी वो थोड़ी गलती तो करेगा ही, but then 80-90% तक वो withstand कम होगा. ये जितने पढ़ रहे वो घर पे बंदे को आपको गाइड करना पड़ेगा कि clean it properly. There are different chemicals, DIY products also available online, which you can spray first and then clean the car easily. So it removes all the dust. A much better solution is also to have a car duster. There are different companies in the market which gives a car duster. So clean the car with the duster once and then use a microfiber. That is also a good solution. So if we go with a daily routine, what do you prefer? If you're having your BMW, which is, back to you, how do you clean that? Because
पर्सनल पैशन जब होती है ना, तब यू डोंट ट्रस्ट द गाय हु इज क्लीनिंग योर कार. तब ऐसा लगता है कि मैं ही 2 बार उसको क्लीन करूं, देन आई एम गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन कि नहीं, दैट्स समथिंग. Despite of me having a car detailing studio here, मेरे घर पे एक बंदा है ही जो मेरी गाड़ी, मैं निकलूँ उससे पहले क्लीन कर देता है, because I want my car to be spotless when I move from my home. So that is always there. But then, as I said, there are certain products and chemicals that you can order online, which preserves the shine, and not only the shine but also protects the paint as well. So main सबसे बड़ा दुश्मन पेंट का अगर होता है तो वो है swirl marks, and that is only and only when you guide your person कि भाई इसको प्रॉपरली क्लीन करना है तो ही वो होगा. बाकी नहीं तो कोटिंग के ऊपर भी वो गिरना ही है. पहले पेंट डैमेज हो रहा है, ये कोट के ऊपर डैमेज हो रहा है. सो वी हैव सर्टन मेंटेनेंस प्रोग्राम्स आल्सो. एज आई सेड, आदमी ये गलती करेगा ही. सो देयर आर विद सर्टन पॉलिशेस you again buff the car and then your car comes back to showroom condition again. That are some great insights which normal people who are not having that sort of PPF or ceramic coating in their car, तो वो लोग भी ये देख के कुछ सीख पाएंगे कि अभी मैं मेरी गाड़ी को कैसे साफ करूंगा. Exactly. और इनफैक्ट PPF अगर आपकी होती है, PPF में तो एडेड प्रोटेक्शन ऐसा है, इट हैज सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज. अच्छा. सो टिल 20 माइक्रॉन्स एनी PPF इन द वर्ल्ड विल सेल्फ हील. अगर आप स्क्रैचेस पड़ भी गए टू अ सर्टन एक्सटेंट, टू अ सर्टन degrees of heat, when it comes on the paint, it will auto heal. Auto heal? Yes. I mean, what's the process behind that? So उसमें TPU लेयर के ऊपर एक सेल्फ हीलिंग लेयर लगाते हैं. PPF के ऊपर 200 माइक्रोन का लेयर रहता है. उसमें 20 माइक्रॉन्स इज दैट टॉप लाइन लेयर वेयर इन इट हैज सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज. सो वही टेक्नोलॉजी है जो देयर आर सेल्फ हीलिंग प्रोडक्ट्स, देयर आर इंस्टेंट हीलिंग PPFs ऑल्सो विच वी ऑल्सो हैव. तो उससे होगा ये कि अभी अगेन चाबी कोई मारेगा तो अंदर 20 माइक्रोन के अंदर चलेगा तो वो स्क्रैच दिखेगा. बट एज यू सेड, swirl marks है, वो सारे स्क्रैचेस व्हेन एक्सपोज टू सन, बिकॉज बाहर समझो 40 डिग्री होगा, लेकिन आपके बोनेट पे भी अराउंड 100-150 डिग्रीज. एंड स्पेशली व्हेन यू आर हैविंग अ ब्लैक कार में तो और भी ज्यादा गर्म होती है, राइट? तो उसमें वो सारा ऑटो हील हो जाता है. सेल्फ हीलिंग एबिलिटीज हैज दोस प्रॉपर्टीज वेयर इन इट विल रिमूव ऑल दोज swirl marks एज वेल. सो कंपेयर टू अ सिरामिक, if you keep both the cars, एक बाजू सेरामिक रखोगे, एक बाजू PPF रखोगे, तो वो PPF का शाइन और वो आपको ओवर लॉन्गर ऑफ पीरियड वो ज़्यादा दिखेगा, बिकॉज इट हैज सेल्फ क्लीनिंग एबिलिटीज. As I've seen the market, there are many market where the guys provide you with PPF and ceramic coating. So can you please share the main myth जो वो लोग आपको bluff करके बोलते हैं, but at the end you are damaging your car? Again, बहुत सारे products available है. Always go and check for genuinity, right? Whenever, in case if you go for a ceramic also or a PPF, just check what product do they use. Do they have warranties? Like our particular ceramic coat, if you see, it is IGS, ISO certified also and SGS certified also. It is specially made for Indian climates. So ये सारी चीज़ें कैसा है, लोग 9H और 10H के नाम पे कोट्स बेचना चालू कर देते हैं. पीपल आर नॉट इवन अवेयर व्हाट 9H एंड 10H इज. सो व्हाट इज 9H? इट इज अ पेंसिल हार्डनेस टेस्ट विच अप्लाइज. वो लैब टेस्ट होता है पेंसिल हार्डनेस पे 9H एंड 10H पे, राइट? दैट इज वेयर द कोटिंग का थिकनेस मेजर होता है कि एक्चुअल 9H और 10H है कि नहीं, राइट? तो वो उसके भी सर्टिफिकेट्स आता है. तो एंश्योर दैट यू आस्क फॉर दैट सर्टिफिकेट फ्रॉम योर डिटेलर और वेर एवर यू डू इट. PPF में भी देर आर डिफरेंट क्वालिटीज़. काफ़ी क्वालिटीज़ में ऐसा भी होगा कि रिमूवल के बाद वी हैव गॉट सम क्लाइंट्स कि कहीं और से PPF सस्ता PPF कर दिया, लेकिन निकालने के टाइम पे व्हाट हैपेंस इज के गम और वो सब उसमें निकल जाता है, राइट? गम पूरी गाड़ी पे रह जाता है. तो वो सारे इश्यूज काफ़ी रहते हैं उसमें. तो ऑलवेज एंश्योर दैट यू अप्लाई क्वालिटी PPF, नॉट अ इंफीरियर वन, राइट? वो सारी चीज़ें उसमें देखनी पड़ती है. ओके. सो इफ वी गो विद द इंडस्ट्री ट्रेंड, तो अभी मेन मार्केट गैप जब आपने H2O कार्स पर चालू किया और व्हेन यू जस्ट थॉट समथिंग फ्रॉम स्क्रैच कि मेरे को ये कुछ डेवलप करना है, तो तब आपने कौन सा मार्केट गैप देखा था जिसमें से आपको लगा दैट आई विल बी एबल टू क्रिएट समथिंग ग्राउंड ब्रेकिंग वेयर आई कैन हैव अ पॉडकास्ट ऑन बियॉन्ड द नॉइज वेयर our team thought कि this entrepreneur is something. Yeah, very good question. पहले myth क्या था? First of all, I was amongst the first ones in Ahmedabad to even start a car detailing studio. लोगों को ये भी नहीं पता था कार डिटेलिंग है क्या. नॉर्मली क्या होता था, आज से 15-16 साल पहले शैम्पू में वो क्लिनिक शैम्पू डाला या निरमा पाउडर डाला, उससे गाड़ी धो ली, एंड दैट वाज कॉल्ड अ प्रॉपर वॉशिंग काइंड ऑफ थिंग. 300-400 रुपये का होता था. वी इंट्रोड्यूस दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट, वी वर चार्जिंग $3,000-4,000 at that time. For what?
for a normal detailing and a wash. What was the price for the wash at that moment? At that time, a normal wash would cost you somewhere around 300, 400. Okay. For which we used to charge 3,000, 4,000 for a complete detailing cleaning job. We were the first in Ahmedabad, in fact, to even start steam cleaning. पहले steam cleaning से गाड़ियाँ clean होती थी. Okay. So we were the first ones to start at that as well. 3,000, 4,000 पहले तो रेट बोलो तो पहले भाग जाते थे कि बॉस मैं 300, 400 में गाड़ी धोता हूँ, आप मेरे को 3-4 हज़ार ले रहे हो, ऐसा तो क्या करोगे? But after they see the results of a normal 300, 400 rupee wash, first of all, a Clinique shampoo or a Nirma powder would ruin your paint completely because it had certain acidic levels also in it. So never ever use Clinique or a Nirma powder. There are several reasons behind it. वो बालों के लिए है और वो बर्तन धोने के लिए, वो पेंट के लिए नहीं है, right? तो वो myth clear करने के लिए we introduced a specific car shampoo also, right? तो pH balance neutralized car shampoo हम लोग ने introduce किया, which enhances the gloss of the paint as well. So yeah, धीरे धीरे 2009 में तो काफ़ी अर्ली स्टेज था. 2-2.5 साल 3 साल लगे लोगों को बताने में कि what car detailing exactly is, but then it was again word of mouth कि आप लेके आओ, आप किसी आपके फ्रेंड को बताओ कि नहीं यार ये तो कुछ अलग है. That is how Ahmedabad got developed with and got understood with what car detailing is. When I was passing through, when I was, I guess in 8th or 9th grade, मेरे को तब लगता है I used to tell my dad कि पप्पा यहाँ पे ना Rolls Royce पड़ी रहती है. So I thought कि the guy is having a Rolls Royce. So whenever we used to go to SG Highway, I was just forcing my father कि हम ये रास्ते से जाते हैं, होप मेरे को Rolls Royce दिख जाए. तो तब आपने स्केल अप जब किया, when you started scaling up your business, how did the multi-millionaires or the top-notch guys from Ahmedabad started giving them their cars at your car detailing studio? So what was the reason when you got a specific, level that, currently we are quoting a Rolls Royce? So I don't think 1-2 साल में हो सकता है. Of वो course surety not, yeah. level कब आपने develop किया? So again, social media was also one factor wherein लोग तो अभी social media use कर रहे हैं. I started my social media campaign and posting way back in 2013. जब Facebook नया start हो रहा था तभी. So I was a completely tech savvy person. Before Carspa also I was associated with things of selling online on a website called eBay. So that is how I developed my online skills. But I was more of an online guy. All right. कोई भी धंधे में जो दिखेगा वो बिकेगा, right? So I used to start posting of the results of the before and after. बफिंग करते थे हम लोग गाड़ियों के पेंट पे, तो उसमें भी बिफोर आफ्टर रखते थे, तो इट वाज अ विजिबल डिफरेंस, राइट? काफ़ी क्लाइंट्स अभी मतलब वेदर यू हैव अ नैनो और अ सुपर कार और अ प्राइवेट जेट, आप सोशल मीडिया पे तो होगी, राइट? तो दैट इज़ वेयर आई गॉट माई फर्स्ट क्लाइंट ऑल्सो. इनफैक्ट माई फर्स्ट सुपर कार तभी तो मतलब Audi Q7 लेवल की कार्स भी अगर आ जाती थी, इट वॉज कंसिडर ओ जोरदार, ये तो कौन सी गाड़ी आ गई, BMW Z4 थी. That was that time wherein BMW Z4 was considered as a supercar. Our first Lamborghini we did was in 2014. Which Lamborghini? Gallardo? Gallardo. All right. तभी Gallardo ही थी, Huracan तो थी नहीं. That was a client in Surat. We went down from Ahmedabad to Surat and got that Gallardo done. उनके पास Bentley भी थी. Result देख के उनने Bentley में भी बोला कि इसमें भी कर दो. So that is it is all about results. Whatever business you do, you have to show the clients the results first, and then they trust you with the process. Right quality, right product, right price, of course, will always be a win-win situation. That's a very great thing कि हमको भी पता चले कि everything is not that thing कि पहले से आपको जो दिखता है वो हो रहा था. There were days when you also thought कि ये धंधा मेरे को बंद कर देना because I'm not able to generate specific amount of money which can help my family or that moment. So did you find something at that point आपको लगा कि To be very frank, I did not, by the grace of God, I did not have that particular kind of a scenario at my place. Why? Because गाड़ियाँ कभी आनी बंद नहीं होनी है. This is one business which will never go out of business. गाड़ियाँ कभी बंद नहीं होगी, right? It, as I said, it's the right process and the right product and the right price with trust. Whatever I did, I wanted to ensure that I give the best quality than what the market offers. तभी तो मैं ही था, अकेला ही था, तभी तो करा था. तो मेरे को इट वॉज अ न्यू थिंग इन द मार्केट. इट टुक टाइम, ऑफ कोर्स. स्टार्टिंग से ही कोई पैसे छापना चालू नहीं कर देता है, सो इट टेक्स टाइम. तो इट वॉज अ प्रोसेस वेर इन
gradually we started, small, and then as years passed away, matlab, this is where we are right now. The largest detailing studio in Ahmedabad. From the smallest to the largest one, yeah. वैसा कोई क्लाइंट था जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट वो आपके दिमाग में यार यू आर हैविंग हिज मेमोरी इनसाइड योर ब्रेन करंटली, कि अभी भी मेरे को लगता है कि यार ये क्लाइंट ने बहुत फ़ोन किए या बहुत मेरे पीछे पड़ा है, दैट्स द रीज़न व्हाई आई रिमेंबर हिम. As I said again, सुपर कार ओनर्स भी काफ़ी मेरे वो टाइम पे तो आई वॉज दी ओनली वन. वर्ड ऑफ माउथ बहुत फैल गया था, राइट? तो विथ फ्रेंड्स ऑल्सो, एक बंदा अगर दूसरे को भी अगर बोलता है तो दैट इज़ वेयर तभी भी, एज आई सेड, वी वर द ओनली वंस. आफ्टर 3-4-5 years लोगों को पता चल गया. आपने ही देखा था बाहर रोल्स रॉयस भी खड़ी रहती थी. तो एज पीपल पास बाय, बुकिंग्स भी आते जाते रहते थे. तो वो सिनेरियो, टू बी वेरी फ्रैंक, ऐसा हुआ नहीं है वेर इन अ क्लाइंट यूज टू कॉल अस एंड कि नहीं करो करो, ऐसा तो नहीं था. बट वी वर इनफैक्ट मोर प्रिविलेज्ड टू डू देयर कार्स, वेर इन मेरे लिए इट वॉज अ फीलिंग वेर इन कि ये गाड़ी तो यार मैं मतलब सोच भी नहीं सकता हूँ. मैं देखता था रोड पे ये सब कार्स, और नाउ आई हैव द प्रिविलेज टू इवन ड्राइव देम, राइट? सो इट वाज अ सिनेरियो वेयर इन आई वाज प्रिविलेज्ड इनफ टू डू सच कार्स. इनफैक्ट, टू एन एग्जांपल, मेरे वहाँ 4 तब मर्सिडीज खड़ी थी, और एक भाई नैनो लेके आए. पहले तो उसने 4 मर्सिडीज पहले देखी, तो पहले तो टेंशन में आ गए कि यार ये बड़ी गाड़ी करते होंगे. हाँ, ये तो बड़ी गाड़ी करते हाँ. होंगे. तो भाई ने पहले नैनो आगे पार्क की, राइट? एंड ही केम टू द स्टूडियो एंड टोल्ड अस के छोटी गाड़ी भी करते हो? बोला हर एक गाड़ी करते हैं, आपके पास कौन सी? बोले मेरे पास नैनो है, और उसको मेरे को ये वॉशिंग क्लीनिंग और सब करना है. बट आप तो यार, बोले सब बाहर आपकी गाड़ियाँ तो सब बड़ी बड़ी है. यू नो व्हाट आई डिड? दो मर्क ये बाजू थी, 2 मर्क ये बाजू थी, दोनों को साइड पे लिया, बीच में उसकी नैनो रखी. वाओ. The kind of feeling that particular guy got, whether it's a nano or a Merc or a private jet that we've done, I treat all my clients as equals, and it is where it is because of them what we are today. And 26,000 plus cars now that we've done. 26,000 plus cars that we've done in the past 15 years. So yeah, each client is very very important and precious to us. So we, like, आपने जो बोला वो सिनेरियो अभी तक तो आया नहीं है. So you mentioned that private jet, what we have done. What was that? Private jet? I mean, are you serious, Harsh bhai? Yes. So I'll tell you what happened. I'll tell you the story behind that as Yeah. well. I am also associated with a networking organization called BNI. Okay. It's a business networking platform wherein like-minded people come to the same platform and share businesses and give referrals to each other. गाड़ियाँ तक तो मैं बोला चलो रोल्स रॉयस कर ली, लैम्बोर्गिनी कर दी, बेंटली कर दी, फरारी कर दी. अभी क्या, वो तो मैंने भी सोचा नहीं था. It was unexpected. So there was this one member in our chapter. He was into renting of private jets. So concierge services provide करते थे. Yes. So they had this service wherein VIP, VVIP clients के लिए they rent private jets. हुआ ये, फ्लाइट के टाइम पे एक VVIP गेस्ट के थ्रू टर्बुलेंस आ गया हो गया, क्या कुछ भी था, एक पेन का मार्क लग गया अंदर. So as I mentioned before, के we are also into interior cleaning for cars, but then this was something which he randomly asked, कि भाई ऐसा पेन का मार्क अंदर लग गया, वो निकल जाएगा आपसे? मैं बोला हाँ निकल जाएगा. बोले चलो आ जाओ. इंटीरियर क्लीनिंग का तो कॉन्ट्रैक्ट ले लिया. देन आई वाज लाइक, पेंट तो सेम ही रहता है फ्लाइट में भी या कार में भी. क्यों, उसमें डिफरेंस नहीं होता कोई? द ओनली डिफरेंस इज द पेंट इन द फ्लाइट और द प्राइवेट जेट हैज अ मोर हार्डर क्लियर थिकनेस. तो मैंने तो ऐसे ही जनरली पिच किया कि हम लोग सिरामिक कोट भी करते हैं, आपका जेट भी चमका देना है. तो ही वाज लाइक हाँ कर दो, मेंटेनेंस में आया ही है, जेट कर दो. वो तो मैंने रैंडमली ऐसे ही पिच किया. नाउ आई वाज द फर्स्ट इन इंडिया. फर्स्ट इन India, 140 billion people, 140 crore people in fact in India have not done that, and I was the first one to ceramic coat a private jet, and I guess 4th in the world to coat a jet. Now मैंने तो सोचा नहीं था, मतलब चलो अभी ले तो लिया, अभी प्रोज एंड कॉन्स क्या इसके, क्या करे क्या नहीं. So I was associated with amongst the world's best detailers on Facebook through social media. You were connected at that moment. Yes, with this person called Paul Dalton. If you search his name back in 2009-10, this guy used to charge 8,000, 9,000 pounds to clean a car or detail a car or protect a car. I hope if he is listening to us, I hope, Paul, if you're listening,
You were my inspiration, you are my inspiration as well. So, what happened was I spoke to him and I told him, hey, cars are fine, but Paul, I've just booked a booking for a private jet to Seramikota private jet. And he was like, okay. Even I have not quoted a private jet yet. And I was like, oh God, really? So how do I differentiate from a normal paint? So he was like, as I said, a private jet would have a more harder clear coat compared to a thicker paint. He was like, go normal only, but then you'll have to do a lot of buffing process and everything. So you would not believe it. A car usually would take probably 1 day for a ceramic coating treatment to be done. This particular jet took us 7 days. 7 days. 7 days to coat it, to buff it, coat it. So it was again, छोटी चीज भी ऊपर नीचे हो गई, गाड़ी का तो मैनेज कर लेंगे, प्राइवेट जेट में अगर कुछ हो जाए तो मतलब इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी. सो वी हैड टू गो स्लो एंड डू थिंग्स इन अ प्रॉपर वे. बट देन अगेन या दैट वाज वन रेफरल जहाँ मैंने खुद ने नहीं सोचा था कि प्राइवेट जेट करेंगे. गाड़ियाँ तक तो ठीक था, बट देन इट वाज अ क्रेजी टर्न अराउंड टाइम फॉर अस. एंड ऑल्सो कोई मेरे वहाँ पे फिर आके पूछे आप कौन सी गाड़ी करते हो, राइट, एज यू सेड कि भाई सुपर कार ओनर्स कैसे आके आपको कन्विंस करते हैं. So if you see over there in our waiting lounge, there is a wall of fame of cars, right? तो पहले मैं उनको वो दिखाता हूँ, उससे भी कन्विंस नहीं हो फिर प्राइवेट जेट दिखाता हूँ कि इससे ऊपर तो कुछ नहीं है सर. देन ही हैंड ओवर से की तुम्हें के लिए भाई ले लो कर लो. तो अभी इसरो में पिच करने का प्लान कर रहे हो या? तो हर्ष भाई, अभी द वे ग्राफ इज ग्रोइंग फॉर द पैशन ऑफ कार्स, सो बहुत लीनियर जा रहा है. आई मीन अराउंड 90 डिग्री. तो when I'm having a budget, right, specific, so what should a person look before buying a car? It also depends on your individual choice, what you're looking for, right? Sports feel लाना है, comfort लाना है, right? Economical range में जाना है, features loaded car चाहिए, off-roading के लिए कार चाहिए. So there are different numerous options as per your liking and budget and what you want to do with it. अहमदाबाद की अगर बात करें तो एज यू सेड 90 डिग्री मतलब ग्राफ चेंज हो रहा है. मतलब अ लॉट ऑफ सुपर कार्स हैव बीन स्टार्टेड कमिंग इनटू अहमदाबाद आल्सो compared to 15 years back. If I share you a stat, a data which I just saw on social media, in 2024 in India, every 6 minutes there was a 50 lakh plus car sold in India. Every 6 minutes. राइट तो वो ट्रेंड अभी बढ़ रहा है, राइट. लग्जरियस कार्स का ट्रेंड बन रहा है. दिस इज स्पेसिफिकली सीन पोस्ट कोविड, राइट. पीपल हैव स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर ऑन देयर लाइफ स्टाइल, मोर ऑन लग्जरी, मोर ऑन देयर पर्सनल नीड्स. आज है कल नहीं, अभी जो है लेट्स टेक द बेस्ट एंड लुक एट द बेस्ट एंड स्पेंड द बेस्ट. तो या एज पर योर बजट लॉट ऑफ फैक्टर्स आते हैं. If you ask me, I am more of a sports car kind of a lover. All right. I would preferably go in that segment. What's your favorite car? You see right behind. VM. Yeah. So it's my baby right over there. I am a avid BMW car fan. वही है, जब मैंने स्टूडियो चालू किया तब मैंने सोचा था BMW लूँ ना लूँ, चला सब लूँगा. राइट. अभी मेरी खुद की एक BM है. I also drive a Mercedes E-Class. So 2 गाड़ियाँ तो है अभी. So yeah, but personal favorite is of course the BMW. What do you like in that? I mean, everyone loves BMW from the German engine which they give. But throttle में feel कैसी आती है? इसलिए ही BMW लेनी है. शॉफर ड्रिवन कार चाहिए तो मर्सिडीज लो, पीछे बैठो मज़े करो. खुद फील लेना है, एड्रेनलिन अगर आपका बढ़ाना है तो BMW gives you that punch and driving feel and pickup. वो मज़ा आता है, किक अलग आती है उसमें. BMW तो है, बट उसके ऊपर एक सेगमेंट मेरे को चाहिए. आई जस्ट वॉन्ट अ स्पेसिफिक जॉनरा ऑफ स्पोर्ट कार ओनली जो बहुत पावरफुल हो और इट गिव्स मी अ बूस्ट ऑफ माई एड्रेनालिन. सो व्हाट डू यू सजेस्ट इन दैट? My dream car, I think, if you ask me, is the Lamborghini. Lamborghini? Which? The Huracan. Huracan. Yeah. So even the Aventador is like crazy fast. मतलब जो शॉक देगा वो आपको ड्राइव का, मतलब it's crazy. So yeah, that is even the electric ones now. I have driven the Porsche Taycan also. तो वो जो फील देता है, the pickup, वो उसमें भी बहुत super pickup है. So yeah, these are certain segments which I would
It's my next dream is that post the BMW, there's one dream that I would want to buy a Lamborghini someday. So, in the era where people have started investing or the companies have started making their products in the version of eco-friendly, environment-friendly, and they have started converting the cars into electric, right? So, do you think that passion for the next to next generation would be in that sort of electric cars? तो उनको exhaust से फर्क ही नहीं पड़ेगा. They just want is that मेरे को power चाहिए. Electronic cars में भी there are fake exhaust sounds that also come, but just to give you that feel, वो feel आएगा नहीं, but आपको वो kick देगा वो sound के वजह से अगर आपको ऐसा होता है, of course it's an electric engine तो sound नहीं देगा, but there are companies who provide that sound also कि आपको वो feel है अंदर बैठे बैठे that you're driving a sports car. Sooner or later that is bound to happen as per the norms also which our government of India is formulating. Sooner or later electric cars are the future, right? पेट्रोल डीजल कार्स धीरे धीरे मार्केट से जाने की शुरू हो रही है. दिल्ली में आप अगर देख रहे हो तो 10 ईयर नॉर्म आ ही गया है. इवेंचुअली सब जगह वो आना ही है. इलेक्ट्रिक कार्स का मार्केट अभी कैसा है, आई वुड सी इज अगेन एट अ वेरी अर्ली स्टेज. If you see 5 years, 10 years down the line, maybe you'll be having more options also. Right now also there are cars which are giving more options. We have a BYD if you're aware. Build your dreams. Chinese brand? It's a Chinese brand, Right. but then again they offer a wide range of products. They also have a sedan sports car kind of a segment. BYD Seal, वो भी मैंने चलाई है. वो भी it's a brilliant car. It's an electric vehicle. It gives you good range also when you drive. So मतलब for an electric vehicle 500-600 किलोमीटर की रेंज वो भी दे रही है. Their upper end version is pretty fast. Like मतलब 0 to 100 in 3.6 seconds is almost faster than a Porsche 911 in an electric. Right? धीरे धीरे वो ट्रेंड भी आ ही रहा है. Porsche Taycan भी आ गई है स्पोर्ट्स कार सेगमेंट में भी. So I feel eventually electric is the future. तो पेट्रोल will be totally पेट्रोल रहेगा शायद. डीजल का फ्यूचर डाउटफुल लग रहा है फिलहाल तो. डीजल का तो डाउटफुल नहीं, वो वैनिश हो जाएगा. हाँ हो ही जाएगा मतलब. But पेट्रोल तो रहेगा. पेट्रोल का आई डोंट थिंक सो इट वुड गो अवे. क्योंकि एंथुसियास्टिक फिर क्या करेंगे. 100% तो इलेक्ट्रिक पॉसिबल ही नहीं है कहीं पे भी. हाँ. बट देन आई होप द गवर्नमेंट फाइंड सम अल्टरनेट सॉल्यूशंस एज वेल. सो दैट वर सम ग्रेट इनसाइट्स कि पीपल डोंट नो ये पूरा एक डिफरेंट मार्केट है इसका. एंड पीपल have started knowing this when they scratch proof their car, if we signify into that. So if someone wants to start in this market, or he wants to build a car detailing studio where he wants to provide this sorts of typical services, so how should he start? First of all, whatever business you start, you need to have passion about it first. Like I had passion for cars. I wanted to do something with cars. So number one point is have passion for what you do. Second is trust yourself, right? Don't feel like कि यार क्या लोग क्या कर रहे हैं, लोग कैसे कर रहे हैं. प्रोडक्ट आपका सही होना चाहिए. Don't ever compromise on quality. That was my number one goal since beginning. भले महंगा हो, अच्छा दो. Quality does not come cheap. If it's quality, it is not cheap. If it's cheap, it's not quality. सिंपल फंडा है, राइट? तो जस्ट गो विथ योर गट. एंड ऑफ कोर्स मार्केटिंग एक्सपर्टीज भी काफ़ी चाहिए इसमें. वो सारी चीज़ें फैक्टर करती है. देन यू शुड ट्रस्ट योर प्रोसेस, ट्रस्ट योर प्रोडक्ट. वंस यू कंबाइन ऑल दीज 3-4 कंपोनेंट्स, दिस इज़ वन बिजनेस विच विल नेवर गो आउट ऑफ बिजनेस. एज आई सेड अर्लियर, गाड़ियाँ कभी कम होने ही नहीं वाली है, वो बढ़ते ही जाने वाली है. एंड लुकिंग एट द मार्केट वेयर इंडिया इज़ राइट नाउ, इट इज़ ग्रोइंग एट अ वेरी क्रेजी पेस. Car sales are at an all-time high. Luxury car sales, in fact, are at an all-time high. So it's the right time if you have the right product and the right connect. As we both are enthusiastic for cars, right? But sometimes people, the financial stats or the people who are into fintech, they think कि ये एक depreciating value है, ये आपको कुछ ज़्यादा return नहीं दे रही है. So as an enthusiastic, how do you signify that? It depends on again what car that you buy. अभी जैसे आप रोल्स रॉयस लेते हो, it is never a depreciating asset. The price of a Rolls Royce always appreciates, right? There are collectors there is a reason why they collect cars, right? Of course the other cars are depreciating assets, but then again अच्छी कार लेनी है आपको, शौक है, तो फिर वो depreciation factor I don't think should be a concern.
But then there are, of course, cars which appreciate also. But then you need to have that kind of money to buy those cars. So who is that specific person who you see who's having a very good fleet of cars? And please, specify that each different cars which he's having and which you are just loving. Because for me, it's Bhupesh Reddy Okay. from Bangalore. Yes. He's just having a wonderful fleet of cars. So Bhupesh's cars are being done by our Bangalore franchisee of Carspa. Okay. All his cars were managed by Carspa Bangalore. Okay. So first of all, Carspa is a franchisee chain that we've taken of Carspa. It's based out of Surat and they have 98 active stores across India. So yeah, Bhupesh की सारी गाड़ियाँ भी उन लोग ने मैनेज की थी. PPF भी किया हुआ है उनकी गाड़ी पे. So yeah, it's a network wherein it is spreading like crazy. Out of those 98 active stores, we are the number one franchisee across India right now since 7-8 years now. So yeah, it's been great association. And like you said, for me, when I look up to someone who has a crazy fleet, I just have one name in my mind is Akash Ambani. मतलब उनकी फ्लीट में उसकी सिक्योरिटी फ्लीट में रोल्स रॉयस घूमती है. सिक्योरिटी फ्लीट में घूमती है. हाँ. I mean, दो तो है, but I was वो thinking तो है पर वो तो मतलब अभी और 2-3 ले लिए उनने. जी वैगन है उनकी फ्लीट में. जी वैगन है, ग्लॉस्टर है. हाँ, ग्लॉस्टर तो मतलब वो उनके लिए तो बट या ही इज समवन हु आई लुक अप टू एंड ऑलवेज फैंसी हिज कार्स बिकॉज इंडिया में जो भी पहली गाड़ी आएगी वो अंबानी फैमिली के वहीं आएगी एंड दे आर ऑल्सो एविड car supercar lovers. So yeah, I always would have a dream referral of doing their car someday. I hope you succeed in that too. Yeah. And I get an opportunity from your end to drive some sort of supercar which you buy in the future. Of and course. I hope we'll that go for a I drive also together. get an opportunity to buy the same, so we can go all for the good best and all my good wishes drive. to you. So anyone from Ahmedabad who's having that good fleet which you think? Quite a few, but it would not be right for me to name them. No, just mention the fleet which they are having. In fact, one of my clients has around 4 Rolls Royces. How much? 4. Which one? They have a Rolls Royce Ghost, the Wraith, Rolls Royce Cullinan, and the Rolls Royce Phantom 8. Phantom 8. And a 5th one is on the card soon, which is a Spectre, Wow. the electric version. One of the finest garages in Ahmedabad. not only in Ahmedabad but Gujarat, I would say. Yeah. No one in West India or in fact one of the best collections in India, I would say. 5 Rolls Royce Ambani family के अलावा Poonawala's के अलावा मैंने तो नहीं देखी है. So let's start rapid fire round, Harsh bhai. What's your favorite car of all time? Lamborghini. What was the costliest car that came to H2O Car Spa for treatment? Rolls Royce Phantom 8. What was the price for that? Approx 15 crores. Which car do you drive personally and why did you choose it? I have a BMW 5 Series and a Mercedes E-Class, but again, as I said, for comfort, Mercedes, and a sports drive, BMW. If you could detail or protect any celebrity's car, whose would it be? Karthik Aryan probably. What's the most challenging car color to maintain and why? Black. SUV, sedans or sports car? What do you enjoy working on most? Sports car are a challenge to work on. So yeah, I love challenges. So definitely sports cars. Electric cars or fuel powered cars? In the future, electric, but personal pleasure, petrol cars. And passion? Petrol. How do you find Beyond the Noise? As हम लोग भी ये पूरा build कर रहे हैं. So what are your views on that? So maybe I'm not a podcast person, but you've given me that opportunity. First of all, congratulations to you for starting this. And in fact, I've seen your podcast also that you've sent me. You've done a phenomenal job with the kind of genres you are putting in. You've also started new. And I wish that you become the number one podcaster in India and Indeed. and beyond India. In fact, looking forward to seeing you reach the top. So that's great. We just had a wonderful conversation and people गाड़ी का नाम सुन के भी उतने मोटिवेट हो, मेरा ड्रीम है कि ये पॉडकास्ट देख के उनको भी पता चले that you can also have that fleet when you start working the way you started and you are on this platform creating Ahmedabad's largest car detailing studio. So that's great. I wish you the best and thank you so much for coming on our show. Most and welcome. It's an honor that you gave us a space where Anytime, and in the future also you want to have your podcast here, you most welcome. So you gave your 2 different cars, the Range Rover and BM. So it's a great thing. So thank you so much, Thank you. Harsh bhai, for giving us this space. Thank you so much.